Hello friends and welcome back to my channel. So this is my 58th dialogue video. So as you noticed, we have come a long way from where we started 6 months back. Okay, now a lot of people are following this channel and it's helping them a lot. So I would request even you to kindly subscribe to it and follow it religiously, because I know that if you do it, it has worked for everyone, and if it will also work for you. So kindly subscribe to the channel. Okay, and whenever you watch any video, kindly, if you like it, kindly give a thumbs up, and if you don't, then kindly mention at least something in the comment section, so that it will be a feedback for me and I can improve from there. Okay, so this dialogue is about housing issue. Here is the introductory statement. A Hindi speaking man is speaking to an officer from the refuge center. He is in search of accommodation as he doesn't have any place to live. The dialogue begins now. Hello, Mr. Sunil. Sorry to keep you waiting. It was a very busy day for us today. How can I help you? नमस्कार श्री सुनील, आपको इंतज़ार कराने के लिए क्षमा करें। यह आज हमारे लिए बहुत व्यस्त दिन था। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ। मैं अपने परिवार के साथ 2 सप्ताह पहले ऑस्ट्रेलिया आया था। मुझे यहाँ रहने की जगह नहीं मिल रही है। मुझे क्या करना चाहिए? I am in a lot of trouble. I came to Australia with my family 2 weeks ago. I can't find a place to stay here. What should I do? I am very sorry to hear that. How did you end up having trouble finding accommodation? मुझे यह सुनकर बहुत दुख हुआ। आपको आवास खोजने में परेशानी कैसे हुई? मैं और मेरी पत्नी शरणार्थी हैं और किराए के लिए घर ढूंढना मुश्किल हो रहा है। हमारे घर के लिए दी गई याचिका को आवास आयोग द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास धन की कमी है। Me and my wife are refugees and finding it difficult to find a house for rent. Our house application gets rejected by the Housing Commission as we are short of funds. So then, where did you stay here all this time? Do you have any relatives you can stay with until you sort your accommodation out? तो फिर आप इस समय के दौरान यहाँ कहाँ रहे? क्या आपके कोई रिश्तेदार हैं जिनके पास आप आवास का मामला सुलझने तक रह सकते हो? मैं यहाँ अपने दूर के रिश्तेदार के पास रह रहा हूँ। भले ही उन्होंने हमें अपने साथ कुछ महीने रखने का वादा किया था, पर अब हाल ही में उन्होंने हमें घर खाली करने के लिए कहा है। I am staying here with my distant relative, even though they promised to keep us with them for a few months. Now recently
They have asked us to vacate the house. Look, we don't have a temporary accommodation at our refuge, but we can arrange a sum of $100 to be paid weekly through Centrelink to help you gather funds for the rental property. देखिए, हमारे शरण स्थल में कोई अस्थायी आवास उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम किराए की संपत्ति के लिए धन इकट्ठा करने में आपकी सहायता करने के लिए सेंट्रलिंक के माध्यम से साप्ताहिक भुगतान के तौर पर $100 की राशि की व्यवस्था कर सकते हैं। मैं ब्रिजिंग वीज़ा पर हूँ, क्या इससे कोई परेशानी होगी? I am on a bridging visa. Will it cause any problems? It shouldn't be a problem, although in your case, we will require your passport, visa notice, and address details to get your application for refuge started right away. यह एक समस्या नहीं होनी चाहिए, हालांकि आपके मामले में हमें आपके पासपोर्ट, वीज़ा नोटिस और पते के विवरण की आवश्यकता होगी ताकि आपके आश्रय के लिए आवेदन तुरंत शुरू कर सकें। इस आवेदन की प्रक्रिया में कितना समय लगता है? How long does this application process take? If you want your application processed urgently, you can contact the number 1-800-985-231 for further assistance. Also, there is a form R18 that needs to be filled in. यदि आप अपने आवेदन को तुरंत संसाधित करना चाहते हैं तो आप और सहायता के लिए 1-800-985-231 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा एक फॉर्म R18 है जिसे भरने की आवश्यकता है। Okay, so guys, this is the end of the dialogue. Now we'll see the vocab section. As you saw, this is a very small one, so not many difficult words are there, so even the vocab section is going to be short. Busy means vyast. Accommodation means आवास. शरणार्थी means refugee. किराए means rent. याचिका means application. आवास आयोग मीन्स हाउसिंग कमीशन. दूर के रिश्तेदार मीन्स डिस्टेंट रिलेटिव. टेम्पररी अकोमोडेशन अस्थाई आवास. रेफ्यूज मीन्स शरण स्थल. गैदर फंड्स मीन्स धन इकट्ठा करना. एड्रेस डिटेल्स मीन्स पता का विवरण. प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस. प्रोसेस्ड मीन्स संसाधित करना. So guys, this is the end of this video. Thank you so much for watching it, and if you like the content, kindly give a thumbs up, and as I said earlier, kindly subscribe to this channel because you can find all the relevant materials for NAATI, and if you just prepare from this channel, it will be enough for you to clear the exam. In fact, I would say that you will score very high marks. Also, kindly share this content with other NAATI aspirants
so that even they can get benefited out of it. Please press the bell icon so that you do not miss any of the notifications, because I upload dialogues on or videos on a regular basis, and I want you to practice them as and when I upload it, so that you do not miss even one of them, because from each video you can learn a lot. So thank you so much guys. Have a nice day. Bye bye.